friends, and welcome to another episode of Auto Show by the Car Mall. 2 decades, yes, 2 decades, 20 years of ruling the SUV space. The Mahindra is back. The all-new Scorpio-n. The Scorpio in his new avatar. They call it the Big Daddy. So we are here to find out that the sting of the Scorpion, the Scorpio with the N, the all-new Mahindra Scorpio, is bearable or not for its competitors. Let's check it out. Let's take you for a drive on the new Scorpio. We are inside the cabin of the big daddies of SUV, the new Mahindra Scorpio N, and let's take it on a drive. It's time to take you on a spin and check whether the big daddy is ready to dominate the Indian roads or not. So this is the key of the new Mahindra Scorpio N. That's the new Mahindra logo, and there are 3 buttons: the lock button, the unlock button, and this is for the boot. So we are driving the petrol engine, the top of the line variant, the Z8L of the new Scorpio N, and it's time to take you on a drive. ये की आप ऐसे भी खोल सकते हो, but ignition के लिए start stop button दिया हुआ है. This is to manually enter inside the door if at all required ever. So it's time to roar the Scorpio N to life and take you on a drive. So there you go. And this is a manual transmission which we are driving, a 6-speed manual transmission. So let's take you for a drive and check out how it feels. Second gear, 5,500 RPM. We've crossed 100. Again, the third gear, 5,500 RPM. It says overspeed because we've crossed 120. Now we're 140. On the fourth gear, the drive is very smooth actually. We already crossed 160 on the fourth gear, 5,000 RPM, and the fifth gear now. And we're cruising on 170. There is body roll in the car, but it is very well contained by Mahindra. We've touched 180 and on the 6th gear. So I have to take a curve ahead, so it's time to slow down. Felt wow, the adrenaline rush, the energy, the power, and the best part is the engine is very smooth, the drive is very smooth, the engine is very silent. Of course we are driving a petrol variant, but we definitely need to wait and see and check out the diesel variant also, and we'll try to get a video for you for the diesel variant, but this video is about the petrol engine. So we're driving this petrol engine on the new Scorpio N. As I told you, this is the top of the line variant, the Z8L. तो ये जो गाड़ी है ये कई वेरिएंट्स में आती है, Z2, Z4, Z6, Z8, Z8L, और ये पांचों ही जो आपके वेरिएंट्स हैं ये आपको पेट्रोल में भी मिलेंगे, डीजल में भी मिलेंगे, और Z2 के बाद Z4, Z6, Z8, Z8L में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही मिल सकते हैं. So you have to choose too many permutation and combinations to choose from. और अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाते हैं तो आपको सेंटर में बकेट सीट्स का भी ऑप्शन है. सो ऑलमोस्ट जो मैं अपने परमुटेशन मैथ्स से काउंट कर पाया, लगभग 25 से 27 वेरिएंट्स होंगे. एंड फाइनली दैट महिंद्रा हैज़ रियलाइज्ड and other automobile companies are also realizing the importance of automatic transmissions, because पहले इंडिया में इतने options automatic transmissions में कभी भी नहीं आते थे. So kudos to you Mahindra. I think after the sales of XUV 700 and Mahindra Thar, जो भी sales हुई हैं, there's a lot of demand for the automatic transmission and there's a long waiting period as well. So in India things are shifting. Like things are moving from diesel to petrol or electric. Likewise, people are shifting from manual to automatic as well. So finally, we are driving it on the expressway, and this car is good fun to drive. We will try to take you on an off-road drive also for a short drive and try to see its off-road capabilities. Let's talk about the engine. This petrol engine is a
2-liter petrol turbo engine or 4-cylinder engine which generates a power of 203 bhp and a torque of 370 Newton meter, my dear friends. So जो पेट्रोल इंजन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, 203 bhp का पावर देता है. वेयर एज अगर आप डीजल इंजन में जाते हो सो दैट गिव्स यू अ पावर ऑफ 175 bhp जो कि आपका Z6 और Z8 वेरिएंट में होता है. अगर इनिशियल 2 वेरिएंट्स लेते हैं आप Z2 एंड Z4 उसमें थोड़ी सी पावर और भी कम है. सो दिस ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो N does a 0 to 100 in just 10.8 seconds, and the 2-liter petrol engine is made it to a 6-speed manual transmission which we are driving. Even जो automatic transmission आता है वो भी 6-speed automatic में आता है, and 3 drive modes भी दिए हुए हैं इसमें which is zip, zap and zoom. So आप अगर इसको easily समझना चाहते हो so it is something like economy, comfort and sports. So zoom is the sports mode where you really want to zoom. बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं फील हुआ, बट डेफिनेटली देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ डिफरेंस. एंड तीनों ही जो मोड्स हैं अगर आप उसमें शिफ्ट करके ड्राइव करते हैं तो वो आप डिफरेंस फील कर सकते हैं. देयर इज़ अ मार्जिनल डिफरेंस एंड यू कैन फील इट while driving the car and changing the modes. And this car also comes with a cruise control, and the car comes with a very nice analog meter. There are 2 analog meters with the MID in the center, और MID में सारा आपका मेन्यू ऑप्शंस है, डिस्प्ले ऑप्शंस हैं, आप चेंज कर सकते हैं. The ride is much more stable and much more comfortable. Even the sitting posture, the driving posture, like I'm driving, obviously जो sitting posture है वो हमेशा बहुत ही अच्छा कमांडिंग एक एंगल है SUV में, महिंद्रा स्कॉर्पियो में जो आता है. सो दे रिटेन दैट कमांडिंग पोस्चर एंड ड्राइविंग पोजीशन व्हेन यू आर बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील. और आगे का बहुत ही अच्छा व्यू है, like when I'm sitting and I'm holding the steering. Even the steering feels very chunky. It's a leatherite wrapped steering with the all new Mahindra logo. It looks very nice and very soft to maneuver. अगर आप इसको सिटी में भी ड्राइव करेंगे so you can always maneuver it with one finger. तो अब बात करते हैं बिग डैडी ऑफ SUVs के प्राइस के बारे में. जो प्राइस है कार का दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 11.99 lakhs. Yes my dear friends, सही सुना आपने, 11.99 lakhs only and goes up till 19.49 lakhs. So ये सारे वेरिएंट्स और ट्रिम्स हैं जिसका कि ये प्राइस है. अभी ऑटोमेटिक का प्राइस कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है. दिस इज़ फॉर द मैनुअल वेरिएंट्स, फॉर द पेट्रोल एंड द डीजल. द बुकिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. यू कैन बुक योर कार नाउ बिकॉज पहले लॉट में सिर्फ 25,000 कार्स बुक होंगी, जैसे कि पहले XUV 700 में हमने देखा था. और आई एम श्योर ये इस बार भी 24 घंटे के अंदर स्लॉट बंद हो जाएगा और प्राइस फ्रीज हो जाएगा. उसके बाद कंपनी रिवाइज प्राइसिंग देगी जो कि पहले से ज़्यादा होगी. सो अगर आपको इतने सस्ते और इनिशियल प्राइस पे ये कार चाहिए तो अभी जाइए महिंद्रा की साइट पे और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कार को ऐड टू कार्ट कर लीजिए. और जो भी वेरिएंट और कलर आपको देना है, इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जस्ट डू ऐड टू कार्ट. जिस दिन बुकिंग्स ओपन होंगी विच इज़ 30th जुलाई, उस दिन 25,000 रुपये से कार को बुक कर दीजिए. एंड जैसे ही आपका नंबर आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यू विल गेट द कार एट द इनिशियल प्राइजेस. सो इजंट इट अमेजिंग गाइज? सो व्हाट अ वे टू बुक द कार. एंड किसने सोचा था कि इंडिया में एक दिन के अंदर 25,000 गाड़ियाँ भी बुक हो सकती हैं. सो आई एम श्योर द स्लॉट विल बी फुल्ड इन फ्यू आवर्स. आप नीचे कमेंट करके बताओ व्लॉग में और मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि ये 25,000 गाड़ियाँ कितने घंटे में बुकिंग बंद हो जाएगी. सो टेक अ गैस and do comment in the section below and let us know what you think about it. So the Scorpio N is a true off-roader and we are here to test some of the off-roading capabilities. The car comes with a latent ground clearance of 170mm. So we have some mud and slush ahead and also some mud and the ruts. So we are going to cross both the terrains with the Scorpio N and let's see how the car performs. That's pretty easy. That's like a cakewalk
for the Scorpio N. I think we need to take it to Spiti Valley now again. It's been a 1-year anniversary of the Spiti Valley. Last year we took the Thar to Spiti Valley, and वो पूरा vlog अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पूरे 7 एपिसोड की सीरीज़ है कि हम महिंद्रा थार से आगरा से स्पीति वैली कैसे कैसे गए, कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस हुए. वी took out some vehicles and towed some vehicles also, like a big tempo traveler. Some people were stuck and कुछ लोगों को हेल्प करा महिंद्रा थार ने. तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एपिसोड की सीरीज़ थी, 7 एपिसोड की. अगर आपने मिस करी तो उसका लिंक इस समय ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है. यू कैन गो. इट्स अ 1-year anniversary also, the Thar anniversary Spiti episode, which we released last year in same month during this same time. So do check out that video. The link is coming on the top. I'm sure the Big Daddy can climb any kind of difficulties and any kind of terrain because it is a Big Daddy. There you go. This is so easy and so comfortable. So we'll test the 0 to 100 of this car. The stats say that it does 0 to 100 in just 10.2 seconds. 3000 RPM. 3, 2, 1, go. 1, 2, 6000 RPM. Crossed 50. We'll run the timer for you on the video. 80. Third gear. 100 crossed. So it is quite peppy to drive and quite fun. The upshifts were, I was making the upshifts at about 5500 RPM to get the most out of it, and it is actually fun and thrilling to drive. The petrol engine is amazing, generating a great power of 203 bhp and a torque of 370 Nm, which is a good power to have with the size of this car. The car is very big in size. It's a proper 7-seater, but it doesn't feel like that you're driving a car of this bigger size. You're totally in control all the time. So we're trying to check the top speed of the car right now. We crossed 100 on the 4th gear. 120 5th gear. Obviously it's giving an overspeed warning. Just doing it for the test purpose. Crossed 150 on the 5th gear, touching 160, and the top gear now. Cruising on the top speed of 160 now. It's a nice drive, very comfortable, very good to drive. 160 to 180 is taking too much of our time. I've pressed the pedal completely, pressed down the accelerator. I've crossed 180 now, and there's a curve. There's a car, so we need to brake. I won't go beyond that because we need to take care of the safety also. But it took quite a lot of time from 160 to 180, and I'm sure it was ready to go beyond 180 as well. So we could have touched about 190 or 200 in this car. You know, I would give it a thumbs up. How big is the daddy? The big daddies of all SUV. We are here to find out. तो देखते हैं, ये आपके सामने खड़ी है नई स्कॉर्पियो. आप देख सकते हो पूरी तरीके से कार का लुक चेंज हो चुका है. द फ्रंट ग्रिल, यू नो, ये सारा आगे का नया लोगो एंड द क्रोम 1 2 3 4 5 6, the 6 fins and the new emblem of the Scorpio. That's the front camera for you. Yes, this car comes with a front and a reverse camera as well. जो आगे का बम्पर है वो आप देख सकते हैं पूरे तरीके से. इट्स नॉट अ फेस अपलेट, इट्स अ न्यू जनरेशन माय डियर फ्रेंड्स. तो सारा कुछ इस कार में नया है. डबल बैरल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे भी आप स्टिंग इंस्पायर्ड डिज़ाइन का एक एलईडी स्ट्रिप देख सकते हैं जो कि फॉग लैम्प्स को सराउंड करता है. एंड यहाँ पे हनी कोम डिज़ाइन का एयर इनटेक के लिए नीचे बम्पर पे स्पेस दिया हुआ है. दैट्स द स्किड प्लेट इन क्रोम एंड सिल्वर फिनिश, which looks very nice. So the all new Scorpio आप देख सकते हो, जो इसका बोनेट है वो भी काफ़ी लंबा है. It's bigger in size than its predecessor. पिछले जनरेशन से बड़ी है कार साइज़ में. There is lot of muscles, cuts and creases in the car that makes the car look very butch and very muscular.
आप देख सकते हो जो बोनेट है बहुत ही स्टाइलिश है. You can see all the cuts and creases on the bonnet. So let me come on the side, the shoulder line, that's also pretty muscular, and this goes all the way till the back in the rear fender from the back door. और अगर हम साइड की बात करें तो आप देखोगे साइड से लुक भी बहुत अच्छा है. ये एलॉय पूरा नया एलॉय है. इट्स अ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट डिज़ाइन. इट इज़ अ 17-inch एलॉय. द टायर साइज इज 245 65 R17. इस एलॉय की खास बात क्या है, ये ट्विन शेड में दिया हुआ है. आगे क्रोम है एंड इधर ग्रे फिनिश है, डार्क फिनिश. सो इन कॉन्ट्रास्ट इट गिव्स इट अ वेरी नाइस लुक. और साइड में आप देख सकते हो पूरा व्हील आर्च में क्लैडिंग दी हुई है. दिस रन्स ऑल द वे टिल द बैक. क्लैडिंग कुड हैव बीन अ लिटिल ब्रॉडर. यहाँ पे साइड स्टेप दिया हुआ है बिकॉज द कार हैज़ अ वेरी गुड हाइट. तो अगर आपको कार के अंदर एंटर करना है फॉर शॉर्टर हाइट पीपल, इट्स ईजियर टू गेट इनसाइड द कार. कार के अंदर चलेंगे बाद में. आप साइड से पूरा प्रोफाइल देखो कार का. द ए पिलर, द बी पिलर, द सी पिलर, बहुत ही अच्छा बॉक्सी डिज़ाइन है एंड इट्स प्रीटी लॉन्ग. ये जो कार है दिस इज़ बिगर इन साइज, इन लेंथ, इन विड्थ एंड ऑल्सो हैज़ अ बिगर व्हील बेस ऑल्सो. जो इसका व्हील बेस है वो 2750 mm 2750 mm का है. यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्रोम का यूज़ किया हुआ है विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए पिलर एंड गोज अप टिल द सी पिलर. एंड लाइक द नेम सेज स्कॉर्पियो विद द एन, दैट मीन्स स्कॉर्पियन. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्कॉर्पियन की जैसे टेल उठी हुई होती है, इट लुक्स लाइक अ टेल ऑफ अ स्कॉर्पियन. ऊपर टेल उठी हुई है एंड इट्स अ स्कॉर्पियन इंस्पायर्ड डिज़ाइन. आगे आपने फॉग लैम्प पे भी देखा और यहाँ पे भी आपने टेल देखी. सो यहाँ अब हम डोर हैंडल्स की बात करते हैं और साइड मिरर्स ORVMs की बात करते हैं. देयर इज़ नो 360 डिग्री कैमरा ओवर हेयर. इट कम्स विद द फ्रंट एंड रिवर्स कैमरा. दैट्स द बॉडी कलर्ड ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स. यहाँ पे डोर हैंडल्स पे भी बहुत अच्छा क्रोम यूज़ किया हुआ है एंड दिस बटन इज़ फॉर इजी एंट्री एंड एग्जिट. ऊपर यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही स्मार्ट रूफ रेल्स भी दिए हुए हैं सिल्वर फिनिश में. अब हम आते हैं कार के पीछे. ये कार का पीछे का डिज़ाइन है. सो देयर इज़ अ स्कॉर्पियो बैजिंग विद अ स्मॉल N. So, like I told you, Scorpion, that's the new Mahindra logo. The rear wiper, the defogger, the spoiler and the shark fin antenna at the top. And यहाँ पीछे बम्पर में भी आप देखोगे तो पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं. That's the reverse parking sensor. नीचे स्किड प्लेट में सिल्वर फिनिश दिया हुआ है and that is the spare wheel and that is the towing hook. ये आपकी रिवर्स लैम्प्स दिए हुए हैं फॉर लाइट. सो दैट इज़ द कंप्लीट रियर लुक ऑफ द कार. आप यहाँ पे देख सकते हो ये टेल लैम्प्स दिए हुए हैं दोनों साइड में. सिमिलर टेल लैम्प्स वॉल्वो में भी आते हैं. हमने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे. सो पीपल कमेंटेड कि इट लुक्स लाइक वैगनआर. सम पीपल डिडंट लाइक द लुक. आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इसका रियर लुक कैसा लगा. और यहाँ टेल गेट पे भी क्रोम दिया हुआ है एंड बटन टू ओपन इट एंड दैट्स हाउ यू ओपन इट. और पीछे भी बेंच सीट दी हुई है. पहले वाली स्कॉर्पियो में अगर आपको याद हो तो एक दूसरे की तरफ फेसिंग सीट्स आती थी, बट दिस द न्यू वन कम्स विद बेंच सीट्स. तीनों सीट्स के बाद यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी कम बचता है. ये थोड़ा सा कर्व दिया हुआ है आर्च में ताकि यहाँ स्पेस मैक्सिमम निकल सके और आप एटलीस्ट एक बैग या एक डफल बैग यहाँ सेंटर में रख सको. बट अगर आपको स्पेस ज़्यादा बनाना है सो यू कैन ऑलवेज फोल्ड दिस थर्ड रो. देयर इज़ अ ऑप्शन टू फोल्ड द थर्ड रो. देयर इज़ अ बेल्ट ओवर हेयर. पुल दिस एंड यू फोल्ड दिस और इसको आप पूरा लिफ्ट कर सकते हो. यस. सो नाउ दैट गिव्स यू मोर स्पेस हेयर फॉर योर बूट, फॉर योर लगेज. ये आपका टूल किट दिया हुआ है. इधर आपका जैक दिया हुआ है. सो दैट्स द जैक इफ़ यू हैव टू चेंज स्पेयर व्हील. और यहाँ पे सारा उसका इंफॉर्मेशन स्टिकर दिया हुआ है. फिक्सिंग, रिमूवल, हाउ टू फिक्स इट, हाउ टू रिमूव इट. एंड यहाँ आपका जो इसका स्पेयर व्हील है वो नीचे है यहाँ पे. दैट्स द स्पेयर व्हील ऑफ द कार. सो नीचे स्पेयर व्हील को खोलने के लिए यहाँ पे एक वेलक्रो है. इसको आप उठाओगे तो यहाँ पे ये कवर दिया हुआ है. दैट इज़ द बोल्ट टू रिलीज द स्पेयर व्हील एट द बॉटम एंड यू कैन यूज़ दिस स्पेस. एंड दीज आर द रियर थर्ड रो सीट बेल्ट्स. पीछे थर्ड रो में AC के वेंट्स नहीं दिए हुए हैं. लेट मी पुट दिस बैक क्योंकि आपको हम बैठ के भी दिखाएंगे थर्ड रो में कि स्पेस कितना है इस कार में. यहाँ पे आई कैन सी दीज टू ग्रैब हैंडल्स एंड सम रीडिंग लाइट्स. There are speakers also over here. There are speakers also at the back. There's a nice window to make the third row look airy, but I don't see any AC vents at the back. So it's time to close this. But I don't know why they have given this because एक दूसरे की तरफ facing seats है नहीं. The bench seats are there.
So I am just wondering why this lever has been given. अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. And now it's time to get inside the car and show you more about the car, the cabin, the seats, the comfort and the features. So stay tuned and keep watching. We're driving the Z8L variant, the manual petrol. It's time to get inside the car. और ये ड्राइवर डोर खोलते ही यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सीट्स मिलती हैं जो कि पैसेंजर साइड पे नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पे मिलेंगी. दैट्स फॉर द लंबर सपोर्ट एंड ट्विन शेड में आपको सीट्स दी हुई हैं. दैट्स अ कॉफ़ी ब्राउन एंड दैट्स अ ब्लैक कलर विच लुकिंग वेरी नाइस. डोर ट्रिम की आप बात करो तो ये पावर विंडो के स्विचेस हैं. ये आपका ORVM फोल्ड करने के लिए हो गया, ORVM एडजस्ट करने के लिए हो गया. एंड दिस इज़ फॉर द चाइल्ड लॉक. एंड ये लॉक अनलॉक का बटन है, ये थोड़ा सा पीछे ज़रूर दिया हुआ है. आगे अगर होता तो बेहतर होता, बिकॉज वाइल ड्राइविंग व्हेन आई वाज लॉकिंग एंड अनलॉकिंग कार इट वाज अ लिटिल अनकंफर्टेबल. डोर ट्रिम भी दो कलर्स में दिया हुआ है, ब्लैक एंड ब्राउन. लुक्स वेरी नाइस. और यहाँ पे क्रोम के हैंडल्स और लीवर दिए हुए हैं. दीज आर द स्मॉल डोर पॉकेट्स. एक 1 लीटर की बॉटल आ सकती है यहाँ पे. सो इट्स टाइम टू गो इनसाइड द कार एंड टेल यू मोर अबाउट द कैबिन. सो वी आर इनसाइड दिस Scorpio, the all new Scorpio N, and wow, just look at the dashboard and the cockpit. Doesn't feel like you're sitting inside a Mahindra. The twin color dashboard, the black and brown, it actually gives it a very luxurious finish. This satin silver color and the chrome lining beneath it, just above the infotainment screen, gives it a very rich and luxurious look. And this is all touch screen. We'll tell you more about the infotainment system. First, let me tell you about the steering. The steering is a leatherite wrapped steering with the new Mahindra logo, and all the controls are here on the steering wheel. It comes with a start stop button. आप अगर यहाँ पे देखोगे तो कार में start stop button दिया हुआ है. This is for the parking sensors. You can activate and deactivate the parking sensors. Headlamp leveler दिया हुआ है आपका. ये AC vents हैं. Again, the black AC vents surrounded by chrome, and the dashboard has a brown finish all over. The plastic, it's a hard plastic, but it's very grainy and a good quality plastic, so it looks very luxurious and very nice. So you can see all the settings in this instrument cluster. और यहाँ पे आप देखेंगे on the right hand side, this is for your headlamps, for your indicators. Left is for your wipers and washers. So that is the infotainment screen. It's a 8-inch screen, fully touch and quite responsive. अभी हम home पे already हैं. We can swipe left or swipe right and choose whatever you want to. These are the settings. You can change the settings, and also this comes with some applications like India Today, Just Dial. There are applications that you can access, and this comes with a inbuilt storage also. वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे. There's a reverse camera. You can click the picture, and whatever picture you click, that goes into your gallery. तो आप गैलरी में जाके उसको इमेजेस को एक्सेस कर सकते हैं. अभी हमने फ़ोटो ली थी. दिस इज़ माई ड्राइव फ़ोटोज़, माई ड्राइव वीडियोज़, USB फ़ोटोज़ एंड USB वीडियोज़. सो माई ड्राइव फ़ोटोज़ में गए हम, एंड माई ड्राइव फ़ोटो में ये इमेज हमने अभी कैप्चर करी थी. सो यू कैन कैप्चर अ इमेज and that goes into your gallery. And the car comes with a Sony sound system with 12 speakers and 3D surround. और यहाँ पे भी अगर आप डैशबोर्ड में आगे देखोगे तो यहाँ पे सोनी की बैजिंग दी हुई है, बिकॉज इट्स सोनी साउंड सिस्टम. यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग आती है विद N, बिकॉज इट्स scorpio-n, because it's a new generation which comes with the N, scorpio-n. यहाँ पे आपके इसके नीचे म्यूट का बटन दिया हुआ है, वॉल्यूम का बटन दिया हुआ है. दैट इज़ फॉर द रेडियो, FM, होम की, बैक की. यू कैन सेट समथिंग फेवरेट, फ़ोन उठाने के लिए, म्यूज़िक, मीडिया के लिए ये बटन की दी हुई है. दिस इज़ AC कंट्रोल्स. यहाँ से आप AC कंट्रोल कर सकते हैं. इट्स अ ड्यूअल जोन AC. आई कैन सेट माई ओन टेम्परेचर, पैसेंजर कैन सेट हिज ओन टेम्परेचर. दीज आर द टॉगल स्विचेस. ये कैमरा के लिए दिया हुआ है. दिस इज ऑटो स्टार्ट स्टॉप. रेड लाइट में कार अपने आप बंद हो जाएगी, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. एज सून एज द टेम्परेचर गोज डाउन द कार विल स्टार्ट. दिस इज फॉर द हज़ार्ड लाइट्स. दिस इज़ फॉर योर ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP ऑन ऑफ करने के लिए. ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए ये स्विच दिया हुआ है. एंड दीज आर द USB टाइप चार्जिंग पोर्ट्स. एंड ये आपके एयरबैग की लाइट जल रही है. एंड द कार ऑल्सो कम्स विद अ वायरलेस चार्जिंग. दैट्स अ वायरलेस चार्जिंग पैड.
Now we are driving a manual. This is a 6-speed manual transmission. These are the parking brakes, the hand brakes, what we call them. Now this is the cup holders, the 2 cup holders. और यहाँ पे एक leather wrap armrest दिया हुआ है, which is very comfortable because when I was driving the car, I felt very comfortable by putting my hand over here. यहाँ पे ये bin दिया हुआ है for storage space. I've kept my mobile and the sunglass holder. There is a sunglass cover over here also. These are the reading lights, and this is the visor without a mirror. Passenger side में visor दिया हुआ है, and there is a mirror and there is a light as well over here. There is a sunroof in the car as well. So this is the first Scorpio to have a sunroof, and these days it's a very important feature because it adds to the roominess and airiness of the car, and it's a good aesthetic feature to have. So there are grab handles over here, one on the driver's side, one on the passenger side. Now let's come to the glove box. So that's the glove box of the car, and यहाँ पे AC का vent दिया हुआ है, open किया हुआ है. So अगर आप कोई चीज़ रखोगे तो वो अपना temperature maintain कर सकती है. The seats are also very comfortable. I've been riding the car from past 2 to 3 hours. थोड़ी off-roading भी करी, but the sitting posture, the riding comfort for the driver, it's very good. So it's time to go and check the second row and the third row. चलते हैं second and third row में और देखते हैं वहाँ का comfort कैसा है. So stay tuned on the vlog and keep watching. We're sitting in the rear seat, and let's open the armrest. And that's the armrest for the second row passenger. The sitting is very comfortable because एक हम height पे बैठे हुए हैं, तो जो comfort level है बैठने का वो एक अलग ही comfort level आ रहा है. There is good amount of thigh support and good amount of knee room, leg room. Even the head room is also quite decent. और ये जो armrest है ये मेरी sitting को और ज़्यादा comfortable बना रहा है. There are 2 cup holders over here if you can see. और यहाँ पे sorry for हमारा सामान बहुत सारा रखा हुआ है. These are the AC vents, and ये AC vent का speed यहाँ से regulate कर सकते हैं. You cannot regulate the temperature because it's a dual zone AC and not a 3 zone AC. But 3 type charging port यहाँ पीछे दिया हुआ है, so we have ports of both the kinds, USB and C type. यहाँ पे storage space दी हुई है for a magazine, and this is very smart of you Mahindra. यहाँ पे मोबाइल के लिए भी एक पॉकेट दिया हुआ है, वेरी यूजफुल, क्योंकि मोबाइल आप पीछे बैठे हो तो गिरता रहता है, एंड दीज डेज द मोबाइल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, सो यू नीड टू कीप इट सेफली. एंड यहाँ पे आपका डोर ट्रिम है. इट इज़ अगेन इन 2 कलर्स, द क्रोम हैंडल्स, द पावर विंडो स्विच, द ग्रैब हैंडल इज देयर इज़ अ हुक ओवर हेयर, देयर इज़ नो साइड कर्टन और साइड ब्लाइंड. लेट मी चेक आउट द कम्फर्ट ऑफ द मिडिल पैसेंजर इन द सेकेंड रो. बीच में भी मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ बिकॉज द सीट इज़ कम्फर्टेबल, एंड यहाँ पे बिल्कुल भी हम्प नहीं दिया हुआ है. नाक के बराबर एक बहुत छोटा सा टनल है, वेरी स्मॉल, सो देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर माई लेग्स, फॉर माई फीट, for it's comfortable for me to sit here as a second row passenger as well. तीनों passengers के लिए separate seat belts दी हुई है, and it comes with isofix style seats as well. And it's time to go on the third row and check out the seating comfort of the third row. यहाँ second row में 60-40 split seats दी हुई है, तो इसको आप fold कर सकते हो यहाँ से. ये fold करने के लिए हो गया. अगर आपको fold करनी है वहाँ से fold हो सकती हो. That is a one touch tumble seat. वहीं से हम third row में जाएंगे, तो आपको थर्ड रो में लेके चलते हैं और देखिए थर्ड रो का स्पेस और कंफर्ट कैसा है. यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, लेट्स पुल द लीवर, एंड यस, सो दैट्स हाउ इट इज़ डन. इट्स वेरी कंफर्टेबल. अब अंदर जाना कितना कंफर्टेबल है वो भी चल के देखते हैं. तो ये रखा पैर स्टेपर पे. टाइम टू ट्रैक योर वे इन. अंदर तो मैं बहुत आराम से घुस गया. इट्स वेरी स्पेशियस. लेट मी जस्ट टक माई सेल्फ इन. There you go. There you go. So I am sitting on the third row now finally. So like all the cars, this is also not very comfortable क्योंकि third row किसी की भी comfortable नहीं होती. My knees are almost touching. I am 5 feet 9 inch height. So आप comfortably छोटे बच्चे ज़रूर बैठ सकते हैं third row पे, but it's not an adult seat. For shorter distances, yes, in the city you can use it for shorter durations. But the rear seats, there's a bench seat. I'm sitting upright. It's a bench seat. There's a nice headrest also here to rest my head there, but there's not much of
headroom. There's not much of knee room. It's a little congested, but thanks to these windows it looks airy and doesn't look claustrophobic. यहाँ पे grab handle भी दिया हुआ है third row passenger के लिए. यहाँ speaker एक दिया हुआ है, यहाँ पे lights दी हुई हैं. So yeah, that's the third row for you for the new Scorpio N. यहाँ पे छोटा सा pocket storage भी दिया हुआ है. If you can see, there's a small pocket storage over here, and it's time to get out of the third row without the help of anyone. So let's see how this works. So there's a lever over here. Once I pull this lever, the seat goes down. Yes, it tumbles, and I can open the door and trek myself all the way out. तो स्पेस काफ़ी है अंदर बाहर आने जाने के लिए. अंदर आना और जाना इतना अनकम्फर्टेबल नहीं था, बट द स्पेस ऑन द थर्ड रो इज अ लिटिल क्रैम्प्ड. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा आज का ये न्यू स्कॉर्पियो, द ऑल न्यू स्कॉर्पियो, द न्यू जनरेशन विच इज कम आफ्टर 2 decades, 2002 में स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी, अब हम 2022 में बैठे हुए हैं. सो इस स्कॉर्पियो का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा. सो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट सेक्शन में जाना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसे लगा और आप कैसी कार्स देखना पसंद करते हो. और अगर आपने मुझे अब तक फॉलो नहीं करा तो अभी कभी जाइए इंस्टाग्राम पे और मुझे फॉलो करिए. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @theautoexpert with a X without a E, and do not forget to subscribe to our channel. Thank you for watching the show. We'll keep coming for you with new videos every Sunday, with new car videos, and every Thursday हमारी सेल्स टीम शोरूम की द कार मॉल की आपके लिए लेके आएगी कोई ना कोई यूज्ड कार का वीडियो. So stay safe, stay healthy, goodbye and God bless.